Hey, good morning. I see that a couple of you are here before time. So हमने सोचा हम भी शुरू कर देते हैं. Maybe 30 seconds earlier than usual, right? आवाज आ रही है मेरी? साफ है? You able to see me and all that? I'm wearing the mic. Yes, I'm wearing the mic. What's up, Yuvraj? Rick? Good to see you guys. Raj? क्या चल रहा है? Ah, for questions, not for theory. It's okay, man. We need to be cool as 20 Kelvin. Rick, I think 20 Kelvin is pretty cold, man. 20 Kelvin is like superconductivity cold. Here. Yeah. Have you guys been reading JDL? I think we were chatting about this, right? I think युवराज ने बोला कि यार JDL पढ़ना थोड़ा मुश्किल है. It's got too much stuff. It's got too much extra content. And I was like, you can read it as a reference book. You have to be clear कि आपको बार बार देखना पड़ेगा कि सिलेबस में है क्या और सिर्फ वही चीज पढ़नी पड़ेगी. That's the best way to use this book called JDL. If you've never heard of this before, then अभी मत शुरू करो. Yeah, if you've heard this before and you've been looking at it, it's a good time to revise things from it, especially the theory bits before the JEE main exam, and JEE advanced के लिए भी बहुत useful है. खैर, welcome to this session on chemical bonding. Descriptions have links to, what does it have a link to? Yeah, notes आ जाएंगे. It has some very interesting crash course material, mock tests, etc. जो आप लोग चाहते हैं तो वो सब है जो आप लोग, if you want to buy stuff, you can also do that. What are we going to do in this session? Well, we're going to talk about chemical bonding. First, we'll go through the NCERT and then we'll do some questions. And where are we on this? Yeah, we've done 6 things. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And this is session number 7 on the crash course chemical bonding. So, without any further ado, you wanted a book for questions. I understand you, Raj. You wanted a book for questions. It's hard to get inorganic questions that are good at the level of JEE main and advanced. It's hard to do that. तो कुछ भी कर लो, जो भी मिलता है कर लो. It's okay. Doesn't matter. अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या करो? You will do whatever is available, right? That's absolutely fine. All right. So I'm sharing my screen. You should be able to see this right now. Yeah. NCERT, the good old lovely book. It's good to do a lot of extra things. But सबसे पहले, and Nidhi attested to this when we did the session on the weekend, right? NCERT पढ़िए, इससे डायरेक्टली चीजें आती है JEE में. Yeah. पहले इसको पूरा सब्जेक्टिव सवाल करिए, उसके बाद कुछ और बुक करिए. What's up? Good morning, Prachi, Shravan, Pranam, Raj. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Okay, so what's important in chemical bonding? That's what we're going to do here. And hold on, let me fix this. So every time I share this, do the screen sharing business, ये फिर से भाई साहब जो है the green thing that's there at the bottom, it's weird, but here you go, fixed in our own amazing ways. All right, so bonding में सबसे जरूरी चीज क्या है? You've got the whole theories of Causal-Lewis approach and all of that. Please पढ़ लेना, इससे सवाल आ सकते हैं. But what's most important is when you start going into this bit right here, Lewis dot structures, the formula of formal charge. ये सब चीजों में से कभी कभी इतने ज्यादा सवाल नहीं आए हैं directly from this, but you need this to be able to draw the structures that come later on. What kind of structures? For VSEPR theory, VBT, etc. etc. VSEPR और VBT में थोड़ा सा फर्क है. एक में लोन पेयर कंसिडर करते हैं, दूसरे में लोन पेयर नहीं कंसिडर करते हैं. We'll talk about that, don't worry, right? What is the main idea of Lewis representation? You represent each electron as a dot. That's it. तो maybe subjective question this is going to be useful, and also you will see कि हमने कुछ JEE में numerical entry question में थे where they'll ask you कि अच्छा भाई साहब बताइए कि totally electrons कितने हैं NF3 में? Like what? Totally electrons कितने हैं? मतलब कितने ही होंगे, right? You have, this one is straightforward, NF3 straightforward. If you have an ion, then it gets a little complicated. Okay, anyway, not just electrons. You say कि lone pair of electrons बताओ NF3 में. Then you're like, okay, I have to draw the structure to do that. For questions like this is very useful. Double dot is 1 bond, 4 dots is 2 bonds, 6 dots is 3 bonds. This is okay, right? इसमें कोई कुछ fancies नहीं कर रहा हूँ. My voice is a bit low. Aye? Yuvraj? Okay. Weird. I'm wearing the mic. Yeah, mic तो हम पहने हैं. Yuvraj, maybe check your volume. I'm also just going to quickly, you have done the theory. That's lovely, Yuvraj. I'm going to open the session on my phone to check if the volume's okay. And you guys also check and let me know the feedback अगर आवाज ठीक आ रही है. My voice is a bit low. It seems it's all right. I mean, I just checked on my phone. So maybe it's, you got to check on your end. Anyway, let's go on. Let's move on with this. This concept of single bond, double bond, triple bond is cool, right? इसमें कोई doubts नहीं है. Yeah. How you represent them using a Lewis dot structure? I mean, though dot is one bond which has 2 electrons. It's as simple as that. I'm not going over details of what's a covalent bond, what's an ionic bond. वो हमने theory में किया है. Yeah, that is there in the playlist. Yeah, links में there is a massive playlist of everything chemical bonding. I say massive because it's awesome and it's done only in about 8 or 9 sessions. Voice is good for you? Okay, that's good. That's good, Yuvraj. Cool.
I think this link, is that link clickable? Okay. Anyway, so that has links to other playlists if you want to check out the theory session in detail. I have used JDLE intensively for this, for the sessions, although it's on the NEET channel. So a bit of overkill for NEET, but I was like, पढ़ाना तो ठीक से पढ़ाते हैं, पूरा चीज पढ़ा देते हैं. So it's definitely over and above the NCERT. ठीक है. Formal charge, first thing that you need the formula thing for, right? Valence bonds minus non-bonding electrons minus bonded by 2. So a simple way of doing this second part, B by 2, I just take it as number of lines. You know, though lines, matlab this is going to be 2. But sure, the formula is 4 by 2, right? You would count this as 4 electrons because each bond has 2 electrons, etc., etc. This is cool, right? How you use this formula? Any doubts on how to use a formal charge formula? Are you guys okay? Hey, Rakshita, what's up? What's up? How you doing? From Karnataka, I remember this. Yeah. फॉर्मल चार्ज आइडियाज ओके. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फॉर्मल चार्ज? देखिए ये सब आउटडेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, व्हिच मींस कि आज अगर आप किसी लैब में जाएंगे and you actually run some experiments, you'll be like, no one's going to ask you what formal charge is. No one's going to ask you what all of this is. But this forms the basis of many things that come later on, right? If you're going to work on metals, if you're going to do metallurgy, you will use something called X-ray diffraction. That's like the most basic चीज आप यूज करोगे. उसके लिए आपको फिजिक्स का डिफ्रैक्शन का आइडिया समझना पड़ेगा, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा. इसलिए JEE एडवांस से सॉलिड स्टेट नहीं हटाए. ओके, यू नीड दैट फॉर मेटलर्जी. तो इफ यू आर आस्किंग कि प्रैक्टिकल यूज क्या है केमिकल बॉन्डिंग का, it helps you clear JEE. I'll be very straight with you. The most useful thing about bonding is the general concepts that are there for the basics of chemistry, helps you clear JEE. And it's very useful for all of organic chemistry. जो आप कभी लाइफ में नहीं पढ़ने वाले हैं आफ्टर 11th-12th मोस्ट लाइकली, बट ठीक है, उसके लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो जस्ट हेल्प विद दैट. लेट्स गेट बैक टू व्हाट इज हियर. फॉर्मल चार्ज का ये प्रोसेस ये है कि अगेन if you take one atom as a central atom, central metal atom, okay, metal नहीं, sorry, central atom, it could be oxygen, could be nitrogen, could be fluorine, whatever it is. उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, मतलब this number is just the outermost, you know, shell के electrons. Sometimes students do something interesting. They write कि oxygen के valency is 2. So that's the valence electron. That's not right. Please don't write this to be the V value of O. Yeah, that's not right. That's going to be obviously going to be 6. I'm going through these weird basics because sometimes students do things like this. ठीक है. Here. There's also a bit of a mention of incomplete octets, odd electron molecules, and expanded octets. Interestingly, JEE Advanced में भी इस पे सवाल आ चुके हैं. बहुत basic सवाल. You literally have to just count the number of odd electron elements or something like that. बहुत random है, but वो आपको दिखाऊंगा. It came in JEE Advanced 2023. So like, okay, great, easy marks, I guess. तो कर लेते हैं. Now, JEE has done, I mean, this NCERT has done something interesting, right? They've started drawing all these structures यहाँ पे, but you don't know how these structures actually look in physical space. So, in my theory sessions that you'll see in the link in the description or also on that comment there, is कि पहले I would go over something else. I would go over VBT and all of that, and ये सब बात हम लोग बाद में करेंगे. Ionic bond के बारे में we have done this in detail in thermo, okay? Because this talks about lattice energy, delta H of solution and all of that. थोड़ा बहुत इसका आइडिया इन सेशंस में भी है if you want to know about this. The only thing you need to know is कि भाई ये Hess law से आप इसका निकाल सकते हैं, right? The lattice enthalpy is a theoretical idea. You can't actually calculate it. So you use multiple different enthalpies to get to this. Although ये bonding में NCERT है, so I'm just covering it, just going over it, but it's actually done in thermo मेरे sessions में. Okay. Lattice enthalpy का आइडिया है, delta H solution क्या है? Delta H lattice plus delta H hydration. मतलब कोई चीज dissolve हो या होगी, it is dependent on both of these things. This energy is positive, this energy is negative. Again, I've done it in detail in the sessions, you can check it out. Let's move on to this bond length वाला bit, but before we do that, VBT and VSEPR, because पूरा bond length, सारे bond parameters, bond order, dipole moment, all of that depends on the structure, okay, and MOT and all of that. तो इसीलिए let me just go over the VBT VSEPR thing पहले, and then उसके बाद और करेंगे. Shlok and Rek are laughing. I don't know what it. I guess I do say a lot of stupid things. बात तो सही है. Okay, Yuvraj, maybe I said something funny. I don't know. Pranam, you're from Aakash, Telangana. Okay, that's lovely. Born-Haber cycle for lattice enthalpy. Yes, Shlok. Absolutely. Absolutely. सही बोला आपने. Polarity of bonds. I'll get to all of this. Don't worry. I'm not skipping any of it. हम लोग करेंगे. But सबसे जरूरी part, and this is what is done so beautifully on JDL. I mean, I absolutely love how much detail they've gone into on this. By how much detail मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ extra बताया. उन्होंने एक दो लाइन NCERT से ज्यादा लिखी है. वो एक दो लाइन makes life so much easier. I'll talk about what that one or two lines are in just a bit. बताता हूँ आपको. खैर, यहां पे इन लोगों ने एक चीज की है जो मुझे डर लगता है जिससे. All of this is scary. I do not want to do this. I will not do this. Okay, what will I do instead? I will focus on number of bond pairs, number of lone pairs. Okay, क्योंकि यार इसके बाद और भी चीजें हैं, right? इसके बाद you say linear है, bent है, linear है. Now from this AB2 business you do not get bent है कि linear है, right?
a three atom element can be either bent or linear. If it's bent, it has some lone pairs. If it's linear, usually does not have lone pairs. But you have the exception of I3 minus, which is in its own thing. I3 minus क्या होता है? I and I और minus sign इस पे हो गया. Now ये वाला ये भी linear है. तो how do you mug this? You do not mug this. You do it from first principles. अगर आपको theory देखनी है तो description जाइए. I've done this very nicely because I've done it directly from the book, from JEE. ठीक है? ये चीज NCERT में दे दी गई है, but I do not think this is useful. ठीक है? I'll tell you why this is not useful. It tells you some things like, for example, they want you to call NH3 trigonal pyramidal and not tetrahedral because this is geometry. Now, there's a difference between molecular geometry and the spatial geometry. Okay, ये दोनों चीज अलग चीज है. Electron geometry, molecular geometry अलग है. Do you guys know what I'm talking about? या फिर सर ये सब सर के ऊपर जा रहा है? Yeah, it'll never come to use. Okay, cool, got it. Metallurgy, हाँ समझ गया, ठीक है. Yeah, metallurgy something I worked on, right? I did materials engineering, so when I was enrolled for a PhD, so उसको मैंने I've looked at it a little closely, so that's why I keep talking about things. I draw things only from my personal experience. मैं general ज्ञान कम देता हूँ, कभी-कभी देता हूँ, but most of the things I tell you is out of my own experience. Do you want me to go over some theory like ये वाला part? This one small thing. Hold on, let me see if I have a presentation from there. A small diagram, not really a diagram actually. इसको मैंने I just made it out of. I'll share that with you later on, I guess. बाद में आप सच shape as geometry. Yes, Shlok, exactly. What Shlok is saying. Exactly वही चीज. I did have that open. I'll look for it. मैं जब तक आप सवाल करोगे, I'll look for that one small page that I wanted to show you. उसको मैं बाद में I'll look for it when we start solving questions. Okay, because this table, it's all over the place. It's confusing. Okay, to me. तो I can't imagine आपके लिए कितना confusing होगा. आप मग कर रहे हो, ये कर रहे हो. It's not fun. You don't have to do that. There's an easy way to do it. Focus only on bond pairs and lone pairs. Okay. Why do I talk about bond pair and lone pairs? Because that is what tells you distortion के बारे में. That is what tells you कि भाई repulsive nature क्या है, right? And that's what tell you what shapes are actually going to be like. ठीक है. So look at this. ये geometry is a little bit better. This is a lot nicer in the sense that they talk about number of electron pairs, arrangement of electron pairs, molecular geometry, and some examples right over here. So this is good till here. यहाँ तक ठीक है. But as soon as we go to the next page, things become weird again, right? Because you have this A, B to E. Why would you do that? Just call it number of, add is just summation of lone pair plus bond pair, right? Add them both up. If it is equal to 4, then boss, it is going to be similar to water, yeah? Like water or NH3. But इसमें क्या हो रहा है? A, B to E. I don't like this too much. खैर, यहाँ पे लोन पे बॉन्ड पे यहाँ पे 3 होंगे, not 4, it will be 3, right? That's what I call confusing. ये A है, B2 है, E है. What are you even talking about? The central guy here is A. Then you've got 2 bonds, okay, and then 1 lone pair. Now, because there is repulsion, इसलिए this will get pushed out, and that's why this gets bent. Okay. So the best way to look at this is to call it 1 LP and plus 2 bond pair. So the sum is still 3. So this is going to be similar to trigonal planar. That's what we're going to go at. But it's not trigonal planar because one of those is just a set of electrons. This is how I want you to think. ये मग मत करो. Don't mug this. This is painful. A, B, 3E, A, B, E, 2. कितना करोगे मग लाइफ में? कोई जरूरत नहीं है. Is that okay? Is that all right? Yeah? Or inorganic. How do you do a lot of practice considering all varieties? Tanay, I'll give you a cheat code. Inorganic is one of those things जिसमें आप theory करोगे then you're good. Practice की inorganic में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है. You need to know theory properly. अगर आप theory आपको properly मालूम है ना, आप आसानी से marks ला सकते हो. In physical chemistry you need a lot of practice. Maths में you need a lot of practice. Physics में parts that have maths you need a lot of practice. But inorganic chemistry directly theory से आता है, उसका थोड़ा application होता है. ठीक है. Theory पढ़ना inorganic chemistry में बहुत जरूरी है. इसलिए मैं JEE बार-बार suggest करता हूँ since तने asked. And इसलिए मैं NCERT को इतना dissect कर रहा हूँ. If you've seen my NEET session, I have not gone into this much detail when I was doing the NCERT वाला bit. But here I'm pointing out things that you should be careful about. Okay. So for example, सबसे जरूरी चीज ये वाला देखो A before E. Look at this. Okay. It gets weird, right? What is this? A before E. मतलब 4 bond pair है, 1 lone pair है. अब वो lone pair कहाँ जाएगा? Will the lone pair go in this equatorial position or will it go ऊपर? How do you know this? How do you decide कि ये lone pair जाएगा equatorial position में या फिर axial position में? इक्विटोरियल एंड एक्सियल समझ में आ रहा है ना? इक्विटोरियल मतलब सेम इस प्लेन में, एक्सियल मतलब एक्सिस ऊपर और नीचे. ठीक है, अगर ये सब कहेंगे तो जेडीई से पढ़ लेना और वॉच माय सेशंस बिलो.
How do you know this? Just let me know quickly. ये बात जरूरी है, इसलिए I'm pausing and I'm spending a little bit more time on this part. How do you know that the electrons are going to be here and not here? Yeah. ऑर्गेनिक के लिए युवराज जी टिप्पणियां पूछिए नितिका मैडम से. ऑर्गेनिक हमारे से परे है. Focus on this right now. Why is the lone pair in the equatorial position, not in the axis position? Why have I drawn it over here? Repulsion order of lone pair. Rakshita is saying something. Let's read that out loud. Oh, lone pair is greater. ठीक है. I like that, Rakshita, because that's what everybody teaches you. But there is a little bit more to this. What repulsions? Go into details. अगर आप JEE पे फोकस करो, details are what are important. क्या detail? Detail ये है कि 120 degree repulsion is, better. It's less repulsive as compared to 90 degree repulsions. Since मैंने आप लोग के साथ स्पेसिफिकली ये नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूं. I have taught this on the NEET channel. I'm assuming you haven't seen those videos, इसलिए बता रहा हूं ये चीज. Right. See, Rakshita, you've got those tricks, right? ये जाएगा, वो जाएगा. But what is the real deal? 120 degree angle, कम repulsion है 90 degree angle से. That is the actual reason. So, now, if I put it over here, अगर मैं यहां पे लोन पेयर रखता हूं, ठीक है, यहां पे B डाल दिया, ठीक है, और एक और B ना यहां पे डाल दिया, तो देखो, there are 490 degree angles, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, sorry, 390 degree angles between lone pair and bond pair. I'm focusing on lone pair and bond pair, right? But now, there is only 190 degree angle and two 120 degree angles. समझ में आया? This is the main thing. I am literally teaching you theory in the middle of a revision session because I know for a fact कि ये कोई नहीं पढ़ाता है. I don't know why. JEE में दिया हुआ है भाई, पढ़ लो. It's not rocket science. मैं कुछ एक्सेप्शन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं लिटरली बुक से पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूं. This is the reason. श्लोक, thank you. 120 डिग्री एंगल में रिपल्शन कम होता है, 90 डिग्री एंगल में रिपल्शन ज्यादा होता है. बहुत ऑब्वियस चीज है, बट अनलेस समवन टेल्स यू, यू विल नॉट नो दिस. समवन हैज टू टेल यू दिस. ओके, दिस एग्जैक्ट वर्ड्स. जनरल चीज, ये सब ट्रिक्स और हैक्स हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां होगा, वहां होगा. नहीं, रिपल्शन, दैट्स इंपॉर्टेंट. इज दैट क्लियर? यश, मैं यही बता रहा हूं, कोई ट्रिक जरूरी नहीं है. दिस इज हाउ यू डू इट. यश, ट्रिक भूल जाओ, ठीक है. ट्रिक्स, आई विल से समथिंग दैट से जिससे लोग ऑफेंड हो जाएंगे, तो I will refrain from that. Yeah, what I am telling you is a lot more important than any trick. This is the theory. ये theory और trick में कोई फर्क नहीं है. In fact, trick में जो है दिमाग ज्यादा खराब होगा. If you try to mug some trick, that is a lot more effort than remembering this theory. आगे बढ़ा जाए. Yeah, Rakshita, but why will it go on the axial plane? यही तो पता करना है. ये axial plane में नहीं, that's not right. See, Rakshita, that mugging thing does not work. यहाँ पे देखो equatorial plane में गया, है ना? Lone pair गया equatorial plane में. That's what I'm saying. You figure out कि lone pair repulsion किसमें कम होगा, right? And you can forget, like Rakshita, this is, I'm not pointing out any flaw or anything. I'm just saying कि mug करने में यही problem है. If you mug, you will mug opposite. Now आपने opposite mug कर दिया गलती से. Yeah, I hate tricks too because they are lazy. Tricks are lazy, and in fact, tricks में ज़्यादा effort लग जाता है as compared to actually भाई sitting and solving things. खैर, we spend a lot of time on this one thing because I want you to understand क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. और यार ये AB3 E2 तो प्लीज दया करो, ये सब मग मत करो. लाइफ में और बहुत चीजें मग करने की, ये मग करने की जरूरत नहीं है. फोन नंबर मग कर लो किसी का, ताकि इमरजेंसी अगर तुम्हारे फोन पे कॉन्टैक्ट सेव नहीं, यू कैन कॉल योर पेरेंट्स, वो मग करो, वो ज्यादा जरूरी है. आई डोंट रिमेंबर एनीबॉडीज फोन नंबर, माय फादर्स, इट्स बैड. खैर, लास्टली सेम रीजन के कारण देखो, ये मैं आई वोंट गो इनटू दिस वन डिटेल. ClF3 का शेप ऐसा क्यों है? Why is it in the equatorial axis, not the equatorial plane, not the axial plane? Same idea. 120 degrees versus 90 degrees, etc., etc. Okay, I wanted to spend time on this because I had a feeling that people would not be sure about this, and comments से यही पता चल रहा है. We'll go over the rest of the stuff a little quickly now. VBT का idea है, जो भी है, this is actually LJ potential. Okay, it's called Leonard-George potential. If you want to read up more on this, it's 612 potential. This is 1 by r power 12. This is 1 by r power 6. This part is 1 by r cube. ठीक है? So there are three things that come over here. These both are negative. This one is positive. The positive value falls very, very quickly. Okay, ये जरूरत नहीं है, but JEE advanced में बोल रहा हूं, अगर कोई तैयारी कर रहा है उसके लिए. Just a little bit of extra information. Okay, this is 1 by r power 12 just means कि बहुत जल्दी जो है it falls very quickly. 1 by r power 6 मतलब कम होता है, और ये this is the least. Okay, so these are three parts of this graph. You know that any क्या बोलते हैं graph, any curve can be represented by some algebraic functions, right? That's what he did. ये भी outdated चीज है, but since पढ़ाते हैं तो बता रहा हूँ, थोड़ा extra बता रहा हूँ. If you want to read this, it's called Leonard-Jones potential. If you want to read up on this, थोड़ा extra idea.
Leonard Jones. This is only if you're preparing for JEE Advanced, okay? और उसके लिए भी overkill है. खैर, the idea of what is directional, what is not, yeah. When you talk about sigma bonds, why is it that you consider only sigma bonds in hybridization? Okay, hybridization or even the shape and all of that is because these are directional. Okay, sigma bonds. Pi bonds are non-directional. ठीक है. Overlapping में अगर negative is zero overlap है मतलब bond does not get formed. Okay, a little bit of theory that कभी-कभी पूछ लेते हैं. Cool. Any doubts so far? Are you guys okay? एक इस पे अच्छा श्लोक, that's great. Mock math मतलब you're taking good mock questions. That's great. Less repulsion or equatorial. Yes, श्लोक. Less repulsion because 120. Yes, thank you for saying that. Yash Moparkar, when you ask for tricks, I told you in detail theory. अगर और detail में देखना है तो you can look at it in my sessions below. These are easy things, sigma and pi bond का overlaps, but you need to have an idea कि ये color इसमें NCERT में तो clear नहीं दिया है. This again is there in JDL, ठीक है? जो ऊपर ये वाला part actually NCERT में दिया हुआ है. See, this is about phase. What is this plus plus minus minus? This is phase. What phase? When you take the, what do you call it, solution to the wave equations, okay? इस phase की बात हो रही है. The phase of the solution to the wave equation. This plus minus is that phase. Like current and voltage, they lag each other. मतलब they are out of 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है ना करंट और वोल्टेज के बीच में. दैट फेज इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, अगर मग करना भी तो ध्यान से मग करो कि क्या मग कर रहे हो. सो अगर प्लस और माइनस होगा इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. ओके, दिस इज नेगेटिव आउट ऑफ फेज एंड दीज वोंट फॉर्म बॉन्ड्स, दीज विल फॉर्म बॉन्ड्स. दैट्स व्हाट दिस इज. एक छोटी सी पेज एनसीईआरटी में दिया बट जेईई एडवांस में से सवाल आ चुके हैं. ओके, ऑलराइट. You are saying that firstly, most electronegative element atom of lone pair present will be placed on axis first, then is filled. अच्छा. हाँ रक्षिता, but उसकी जरूरत नहीं है. I get what you're saying, but उन सब की कोई जरूरत नहीं है. Because it's extra, a lot of extra things for you to remember, which no one tests. कोचिंग में बहुत एक्स्ट्रा चीजें पढ़ा देते हैं जो कोई नहीं पूछता है. जेईई में एडवांस में कोई नहीं पूछता है. बट बाबा दाम के जमाने से पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते जाते हैं. ठीक है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि what is necessary for even JEE main and advanced. The different types of hybridization is pretty straightforward. I'm not going to spend too much time on this in our revision. Yeah, please read this. The last bit that I feel that is important is this concept of well, MOT and all of that, right? Molecular orbital theory. इसमें से you need to understand that this is an extension of the same ideas जो थे atomic orbitals में. We are combining them, okay, summing them up, subtracting them, etc., etc. Summing, subtracting again because of phase difference only. Okay, subtracting when there's a out of phase, adding when they're in phase. Okay, constructive and destructive interference की बात हो रही है. So that's why you get something called Gerard and Ungerard orbitals. Okay, this is what JDD uses. This is the terminology, and this is what the research also worked on. मतलब this is lower energy and this is higher energy. This is the star and this is the regular sigma. Okay, sigma star, sigma whatever, pi जो भी है. ठीक है. If you look at the energy diagram, it will look something like this. ये थोड़ा नीचे जाता है. बहुत amazing diagram बनाया है और ये थोड़ा ऊपर होता है. Something like that. Okay. So this, I'm not drawing this right. Hold on. Let me just look at the figure and draw it for you. ये सब चीजें किसको याद रहती है, right? So the best thing is to just look at it quickly before very confidently drawing something wrong, है ना? Covalent bond, covalent bond, covalent bond. मिल गया. Yeah, this is exactly how you study. You literally open a book and consult it if you're not sure. मिल गया. This is the diagram. Since I have a physical textbook and not a PDF of the book, which is why I'm drawing this for you, right? So this looks like the bond formation. So this is the Gerard orbital and this is Ungerard. Okay. What do I mean by Gerard and Ungerard? This is symmetrical and asymmetrical. Okay. These are, I think, German words. This is zero energy. Okay. This is it. Cool. Chalo. I am going into overdrive. I know I've spent almost half an hour on theory. I intended to spend 15 minutes, but I just like chemical bonding so much. So I just thought, okay, let's just talk about this. Khair, from the exam point of view, these two things are important. Yeah. NCERT में, they say that Z axis is the bond axis. ठीक है. मतलब कि Z axis के across sigma bond बन रहा है. Okay. So pi bond will be either in Y or X axis. NCERT में ऐसा दिया होता है. Read the question carefully. If they say that X axis is the intermolecular axis, the internuclear axis, then things could change. अगर ये चीज सर के ऊपर जा रही है तो सवाल देख लेना. We will solve it there. For greater than 14 electrons, ऑक्सीजन में पहले पाई फिर पाई स्टार, पहले सिग्मा फिर पाई स्टार and then sigma star again. In this case, it's पहले पाई फिर सिग्मा फिर पाई स्टार and this thing.
ओके, बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इज गुड, एंड बॉन्ड लेंथ 3 इज एट 14 इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज अ ट्रिक. यश कहां गए? यश जयसवाल व्हाट्सअप. MOT, hello, we never called it MOT, always call it wow, Yuvraj, that's funny. all right, all right, this phase represents direction in an orbital through nodal plane. Tane, that's a lovely thing, but I don't think the phase represents anything physical, right? Tane, the thing is, then when you talk about phase, right, when you talk about psi, this doesn't have any physical significance, but when you talk about psi square, that has physical significance. समझ में आया? तो psi square, you know this. Yeah, I'm going diverting a little bit, but atomic structure में ये था, ठीक है? तो ध्यान रखना. I'm not sure about what Tanay said there, इसलिए I'm just calling it out. Maybe you're right, but I'm not sure about this. ठीक है? All right, ठीक है. This is the only trick that maybe helps. यार कभी कभी पूछ लेते हैं सवाल, तो ठीक है, why spend time on this? 14 इलेक्ट्रॉन पे 3 है, प्लस और माइनस में हाफ हाफ कम होता जाता है, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, हटाओ, हाफ हाफ बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाता है इधर में. चलो शुरू करते हैं. अगर बॉन्ड ऑर्डर हुआ 0, मतलब मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट. व्हाट इज एनीथिंग एल्स दैट वी शुड चैट अबाउट? आई थिंक वी हैव डन इनफ थ्योरी. थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अगर इंटर मॉलिक्यूलर है तो हाइड्रोजन तो जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इंट्रा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस. एंड द फनी थिंग इज, बॉन्डिंग इतना भारी सा चैप्टर है और इसमें है सिर्फ और सिर्फ 40 सवाल. इक्विलिब्रियम में कुछ 73 क्वेश्चंस, बट इक्विलिब्रियम से सवाल कम आते हैं एज कंपेयर टू बॉन्डिंग. एनीवे, दिस इज हाउ इट इज, दिस इज लाइफ. Let's get back to this. I'm quickly leaving the link of everything here. फिर से, let's start some questions. The reason why I went into so much detail in theory was because you guys were not sure about the whole वो वाला part, VBT वाला part, VBT, VSEPR theory वाला. Let's start. Metallic bond बता दूं? तने यार पढ़ ले man. Metallic bond में क्या बताना है? It forms CF electrons होते हैं. There is not much there, right? CF electrons. I don't know what else to say there. CF electrons में तने and metals sit in their lattices. I don't know what else to talk about there. If you have something specific you want me to say, बताना, I'll let you know. Here is it. The first question. H3O plus, acetylide anion, NH4 plus, ClO2 minus. This is a PYQ from JEE Main 2023. Match the column. करो. Shape. Shape डालो. Shape डालो. That sounds funny. Tell me the answer to this, please. Go ahead. I am searching for a window. Whoa, this became weirdly huge. Okay, I found a window. Any doubts on how to start this question, or does this look very, very like alien? Doston, is this okay or is this like complicated as heck? Chemical bonding, chemical bonding. I think I found what I was looking for. Almost. No, not yet. Hybridization. This is the one I think. 1 second. Still my guitar gently weeps. What do you have here? B. Okay. Simple है. Easy. Says श्लोक. तने क्या हुआ यार, तुम तो शांत हो गए मेटालिक बॉन्ड पूछ के. भाई गूगल कर ले मेटालिक बॉन्ड के बारे में. Tell me how I can add value to what you're looking at and I will do it. Okay. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि I will not tell you about metallic bond, but what do you want to know? What do you want to know that something online or reading a book will not tell you? Tell me that and I'm happy to help you with that. Only C for A and B. Okay, ठीक है. You've got some tricks and hacks already. Lovely है, brilliant है. Okay, how do we do this question? Only say for E and B. पहली बात, एसिटिलाइड आयनायन होता क्या है? सबको मालूम है ना, कोई डाउट नहीं है कि व्हाट इज एसिटिलाइड आयनायन. इज दैट ओके? लाइक इज देयर एनीबॉडी हु डजंट नो व्हाट एसिटिलाइड आयनायन? इट्स ओके इफ यू डोंट नो. ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ चिल्ला दूंगा अगर आपको मालूम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आई एम सीरियसली आस्किंग, लाइक इफ यू डोंट नो, टेल मी, आई विल टेल यू व्हाट दैट इज, बिकॉज you need to know that, right? Common names, so a little bit of organic chemistry also in the mix. अगर उसका common name नहीं मालूम है, then you're like, what does this thing even do? Like, what is this ion, right? So only option acetylide is enough. देखो, yeah, right. So if you are reading the NCERT, this is the moral of the story, and you know what the common name of the gas acetylene is? Acetylene की torch होती है. C2H2 is acetylene torch वाला flame and all of that, right? Okay, anyway, so acetylide, acetinylide ion, acetylide, not I hate organic. Sorry, I don't hate it. I'm just bad at it. Acetylide ion.
is just simply CH, CH. There's one H goes off there. ठीक है. So this is linear, right? There's no doubt whatsoever because this is sp hybridized, right? Is there any doubt that this is sp hybridized? अगर ये हो गया linear और क्या हो B2 तो आंसर हो गया B. बिल्कुल सही रेक भाई साहब, बिल्कुल सही. युवराज रेक तनय इज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन. हाँ मैं समझा नहीं आपकी बात. तनय कोऑर्डिनेशन मतलब देखिए एनसीईआरटी में आई एम जस्ट गोना बिकॉज तनय इज अ लिटिल कंफ्यूज्ड. I went over that part a little quickly, so these are some notes I opened up. Hold on. Let's go to hybridization. अरे तो कहीं और चला गया. ऊपर जाइए भाई साहब, यहाँ नहीं. Not here. Not here. Where is hybridization in NCERT? Here is hybridization in NCERT. तने SP hybridization देखो. 3 is SP3. कहाँ गया SP यार? There you go. SP hybridization. Okay. This is explained in terms of BeCl2. नहीं, hold on. I think ये फिर से करते हैं in NCERT where they do it in terms of CH2 also. Do they do that or do they not do that? I think they do. मुझे हल्का सा आता करते हैं. Quickly looking at it. नहीं, I guess नहीं है. खैर anyway मैंने सेशन में अपने पढ़ाया है how this works out. Here you go. तनय देखो इधर sp hybridization Hc2H2. In the formation of ethyne molecule, both the carbon atoms undergo sp hybridization, having two unhybridized orbitals, 2py and 2px. देखो दोस्तों, when I tell you to read NCERT, I don't mean it out of spite कि यार तुम लोग NCERT भी नहीं पढ़ते हो. I'm telling you NCERT पढ़ो, you'll be able to do JEE main questions. And this proof of this exact thing, right? All you need to know is कि ये क्या है, as Rek pointed out, acetylide है क्या चीज? Common name जरूरत है, and Tane I just showed you was in NCERT in bonding and not in coordination. I don't know if it's in coordination or not. It's there right here. This has 4 bond pairs, right, and no lone pairs. NH4 plus. NH3 में है 3 bond pair और 1 lone pair. NH4 plus में no lone pair. That lone pair electron is where this hydrogen attacks. Okay. ये H plus भाई साहब भाग के आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन के पास और यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, तो ये प्लस साइन चला जाता है इधर, and this bond forms. Okay. So this is what you get. This is the ion we're talking about. And usually what you do if you have an ion, you put a plus sign outside it and not inside. Okay, this is the standard way of denoting this. ClO2 minus has 2 bond pairs, 2 lone pairs. Okay, 2 bond pairs so clear hai. Remember we're only counting sigma bonds. I know the answer is B, but we have to prove this, right? इसमें क्या हो रहा है? 2 bond pairs और 2 lone pairs. So how इसका shape क्या होगा? ये थोड़ा अजीब लग रहा है. Okay, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसको अभी तक छोड़ देते हैं. B is 2 for sure. H3O plus is going to be tetrahedral or pyramidal or bent. NH4 plus is tetrahedral. Okay. NH3 ammonia is pyramidal. But NH4 plus is definitely tetrahedral. Okay. So C should be 1. We are good there as well. What about H3O plus? H3O plus is going to be pyramidal. Okay. A3. Why is H3O plus going to be pyramidal? Because you have O, H and H. And just like that, there were 2 lone pairs here, right? One of those lone pairs में H plus भाई साहब आ जाते हैं. And ये बन जाता है इस टाइप का molecule. Okay. This is what you finally get for H3O plus. Okay. This right now, although there is a lone pair, it does not show up in the shape as such. So this structure, this is the pyramidal thing that we are talking about. Cool. And to do this question to बहुत आसान था, right? If you know what acetylide is, you do it. If you don't, you can see it gets complex very soon, very quickly. The trick is to know the theory. There's no other trick in inorganic chemistry. ठीक है. अगला सवाल करते हैं. Consider the following statements. Hybridization sp3 की sp3 है ClO2 में, but 2 lone pairs so bent. Yes, Shlok. Perfect. Lovely. Thank you for answering that, Shlok. Tanay, I hope this is okay, right? If you know that the ion is that, called that, then बहुत जल्दी, otherwise थोड़ा टाइम लगता है. ना अगला सवाल देखते हैं. Consider these statements. NF3 molecule has a trigonal planar structure. Bond length of N2 is shorter than that of O2. Isoelectronic molecules or ions have identical bond order. Dipole moments of H2S is higher than that of water molecule. भाई 4 सवाल. I mean literally 4 सवाल हो गए एक में. But you only have to select that 2 of these are correct. Looks like दो के bunches में कर रहे हैं. This is a MCQ, right? So एक ही आंसर करेक्ट होगा. इसको ट्राई करो. So this is what makes JEE main complicated, right? Because then you need to know theory inside out to be able to solve question on this. So अगर अभी तक chemical bonding नहीं किया है तो जैन के लिए मत पढ़ो, ठीक है?
being very straight with you, because there was somebody on Reddit जो पूछ रहा था chemical bonding छोड़ दूं कि कर दूं, but that student was in 11th. I was like, भाई पढ़ ले, and I gave him a long list of क्यों पढ़ना चाहिए तेरे को, bonding कैसे करोगे, how will you do the whole of politely, very politely, I told him you need to do the whole of organic chemistry. How are you going to do that without the idea of what is a electronegative element and what is less electronegative? Anyway, hybridization क्या होता है, तो उसको मैंने बोला भाई पढ़ ले, but if you are in 12th and आपका एग्जाम एक महीने में, I don't know guys, I think you should focus on your strengths. Let's go back to what the chat is saying about this question. बबलू, प्रणाम बबलू जी, आप नए हैं यहाँ पे लग रहे हैं. श्लोक, Rick, युवराज and Tanay are all saying C. And Shlok seems to have found the hack to this question, which is lovely. What is the hack to this question? Rakshita is also saying C. So there are 5 folks who are saying that this is C. Okay. Bond length of N2 is shorter than O2. Okay, what were you talking? Which option are you saying? Bond length. Bond length. And इसके लिए N2 और O2. This is let me write things down one by one. Yeah. 3 bond pair और 1 lone pair है NF3 में. This is fine, right? So it can't be planar. This one is not right for sure. इससे I can eliminate option B and D. ठीक है. Next वाला क्या है? Triple bond versus double bond. Don't worry about, don't go into calculating bond order. अरे ये होता है, वो होता है. N2 का bond order is 2. Oxygen का bond order is 3. It is simple. Complicate मत करो life को. ठीक है. ये चीज याद रखने वाली चीज नहीं है. This is basics. तो कभी कभी you have to go a little bit far away from the problem to see what is really happening. And this is one of those cases, right? नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर है 3, क्योंकि 3 बॉन्ड फॉर्म करता है, ऑक्सीजन का 2. व्हेन यू हैव O2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस, देन यू गॉट टू फिगर आउट अच्छा इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा. बट हियर इट इज क्वाइट डायरेक्ट. ओके, खैर अगर बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा है, और फॉरगेट बॉन्ड ऑर्डर आल्सो यार, वो सब जरूरत नहीं है. ट्रिपल बॉन्ड इज ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड, सो इसका N2 इज गोइंग टू बी शॉर्टर. या दैट इज ट्रू, ये वाला सही है. अगर B सही है देन दिस वन इज सही, बिकॉज में B नहीं है ना. खत्म हो गया, आपको आंसर मिल गया. लेट्स एक्सप्लोर द अदर ऑप्शन एनीवे. Isoelectronic molecules or ions have a radical border. Yes, because that is the definition of isoelectronic this thing, right? What do you have? Bonded minus anti-bonding orbitals, electron by 2, right? So अगर same electrons are isoelectronic, same होगा. Last वाला point, dipole moment of H2S is higher than that of water. We already arrived at B and C are correct. मतलब D must be wrong. But why is D wrong? देखो, एक तो मैं स्ट्रक्चर से समझा सकता हूँ, एक और तरीके से समझा सकता हूँ. दिस इज अ कॉमन सेंस वे ऑफ डूइंग इट. पानी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे. H2S इज अ गैस, सो ऑब्वियसली उसका जो भी इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन है कम है, डाइपोल मोमेंट कम है, ऑल दैट इज देयर. ठीक है, नोवेयर क्लोज. एनीवे, इफ यू वांट टू सी दिस, बिटवीन H एंड ऑक्सीजन देयर इज अ बिगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. ओके, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज लोअर between these two. ठीक है, that's it. उससे भी देख सकते हैं. तो आंसर इज वेरी क्लियर कि B and C are correct. I know you guys identified, बहुत अच्छा किया. Slok and everybody else who got this quickly. Satellite view, हाँ, that's a good way. Satellite view, that's interesting. NF3 is pyramidal, sir, ऊपर गलत लिख दिया है. मैंने क्या लिखा, मतलब NF3 is not linear. मैंने linear कहाँ लिखा यार? Did I write a previous question or something? Shlok, yes. Ram, Bhavesh. हाँ, you've been in my sessions. I'm not sure NEET में या JEE में, because I teach both. Arman, what's up? Is this question okay? Yeah, these sessions are great. This is great as well. This question all right? Shall we move on? Hey, Rakshita, where did I say NF3 is linear, bro? Did I say it by mistake? If I did, I don't know. यहाँ पे लिखा तो 3 bond pair और 1 lone pair है ना, which is right. 3 bond pair, 1 lone pair, which must be pyramidal. You're right. Just like H3O+. ठीक है, अगले सवाल में देखते हैं. What is the order of covalent bonds in all of these? Okay, let's put an extra word there. Okay, और characteristic, covalent bond characteristic. ये this is a JEE का सवाल, तो इसलिए मैंने कुछ बदला नहीं है. Percentage covalent bond character, जो भी बोलना चाहो. Choose the correct answers from the options here. You've got a lot of them. Typical JEE का question, but it's very interesting. This is just testing your Fajan's rules वाला ideas. Try it out. इसको try करो. अच्छा. Oh, अच्छा. चिल्ले. Okay, thanks for clarifying. Thank you. All right. Let's try this one out.
दिस यूजेस फजान्स रूल्स एंड फजान्स रूल्स के आसान सवाल आ जाते हैं, तो थोड़ा छोटी सी थ्योरी वाली बात है, यू कैन चेक इट आउट इफ यू वांट. ओके, अरमान मोहम्मद उमर आर सेइंग सी. ओके ओके, थोड़ा और ट्राई करते हैं. नोडल स्ट्रक्चर एंटीबॉडी करेंगे. शिव, वी आर डूइंग अ रिविजन सेशन, राइट? If you want to do this specifically, I have done this in atomic structure in detail. I know it's weird that why did I do an atomic structure, supposed to be in bonding, but मुझे याद है I have done it in the atomic structure PYQs. आज टाइम तो नहीं है यार वो करने का, right? But is there an NCRT, right? Hold on. Nodal structure of anti-bonding orbitals. I think JEE में तो है. I'm just thinking कि शायद NCRT में भी था ये नोडल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी. हाँ है, तो देखो एनसीईआरटी पढ़ ले यार, जिसने भी पूछा. सॉरी शिव, देखो दिस व्हाट आई टॉकिंग अबाउट, राइट? दीज आर ए बी, दीज आर बॉन्डिंग. इस पे जेई पे सवाल आ चुका है. दीज आर ए बी, दीज आर बॉन्डिंग, एटसेट्रा, सेम चीज है, राइट? Anything that I can add to this, it's done very well at NCERT, so I did not talk about this too much in the session today. The theory bits I spoke of mainly जहां पे मुझे लग रहा था कि आप लोगों को confusion हो सकता है. This मुझे direct लगा. Is there, if you have any doubts, you wanna bounce some ideas off me, ping me on iTeachChem on Discord or on Telegram and I can help you out there. ठीक है? मुझे लगा नहीं उस theory में कुछ बहुत बड़ी बात है या कुछ चीजें समझने वाली. That's why I haven't covered it explicitly here. But yeah, cool. Read the NCERT, you're good. If you still have doubts, ping me. Couple of you are saying C. Bhavesh is also saying C. Yuvraj is saying C. Tanay C. Rek is the only person saying D. Odd person out. Okay, cool. Yeah, Bhavesh, I'm sorry, Rek, do you want to convince the others as to why it is D? लग रहा है सब लोग बोल रहे हैं C है, आपको लग रहा है D है. What do you think? यार दोस्तों, ये क्या किया आपने? बी तो डेफिनेटली करेक्ट है. बी तो डेफिनेटली करेक्ट है. अरे बी इज द मोस्ट ऑब्वियस वन टू मी. आई डोंट नो, मेरे लिए. लेट्स राइट डाउन फजान्स रूल्स. है क्या? कोवेलेंट कैरेक्टर अगर छोटा पॉजिटिव आयन, लार्ज नेगेटिव आयन अगर वो आसानी से पोलराइज हो जाए, बड़ा हो जाए, उसका चार्ज डिस्टॉर्ट हो जाए, तो कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक होगा. ठीक है? नेगेटिव मतलब एनायन, ये है कैटायन. ठीक है? और अगर लार्ज चार्ज है, अगर चार्ज का नंबर लाइक many electrons that go away, that then also it's covalent. And D10 configuration वो copper वाला था, right? This is copper exception. All this is copper. So you've got this one right. CuCl is more than NaCl. All of you have said this is correct. So C, option C is correct with what you're saying. I agree with you, right? SnCl4 is greater than SnCl2. Yes, because of that +4 वाला charge, 4 plus or 2 plus. यार ये वाला भी मुझे सही लग रहा है. See, LiF is greater than Kf for sure. Kf is very ionic. LiF is definitely not ionic. It's covalent. And Kf and Ki make Ki will be more covalent because I is big. I is big. Okay, large anion. तो इसकी वजह से B और C तो पक्का करेक्ट है. अगर B और C करेक्ट है, I have to just check E because I also have this. ये तो नहीं है. Both of these are out. B and options B and C are out. Statements B and C, यार पता नहीं JEE ऐसी हरकतें क्यों करता है. और did I mess it up? I think ये 1 2 3 4 होगा ना शायद. खैर, anyway, जो भी है. The statements B and C are correct for sure. Statement A is, let's see, statement A is incorrect, right? Because contradictory है अभी. तो B और C तो correct है. D में देखते हैं. LiF, KF, this is okay. CuCl, now this is incorrect because CuCl is more covalent than NaCl. जाहिर है ना यार, NaCl को पानी में डालो बन जाता है. You know NaCl is very ionic. कोई डाउट उस पे नहीं है. CuCl must be covalent. This is a bit of a scam, but if you know this, D10 configuration is an exception, and उसकी वजह से it becomes covalent. क्योंकि it doesn't have electrons to just roam around, right? It doesn't really like being ionic, like sharing. ये मैंने किया है theory में, you can check it out. But option E is also correct, which makes the only one this to be correct is this. But all of you figured option E is correct. मुझे ये नहीं समझ में आ रहा. How do you guys not figure कि option B is incorrect? I mean, is correct. Just let me know in the comments. Yeah, सब लोग. Deepak piping in with the first D's after rec. Yuvraj also changed their answer to D. Deepak, Yuvraj, rec. हाँ, thanks rec. जो मैं बोल रहा था कहानी लंबी सी, वो एक लाइन में rec ने लिख दिया. Beautiful.
Mohammad Omar saying D, Shlok saying oh yes, great. Areeb G also saying G, Bhavesh changing their answer to D. और मजे की बात ये है, ये सब भी एनसीईआरटी में है. You want me to prove it to you? एनसीईआरटी में है ये सब. देखना है. वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी में. Here you go. एक एक शब्द. Smaller size of cation, greater the charge on cation, larger size of anion. और क्या चाहिए भाई? D10. ये देखो S0, same size and charge, the one with electronic configuration DN, NS0 is typical of transition metals. This is more polarizing than the one with the noble gas configuration. मतलब कि noble gas कौन सा था? Na, ये Cl, Cu. मैंने बोला था एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल आते हैं जेईई मेन में. जस्ट प्रूविंग व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर. ठीक है, इसलिए मैं एनसीईआरटी खोल के बैठा हूं ताकि आपको दिखा सकूं, प्रूव टू यू. ठीक है, आंसर इज डी. लेट्स मूव ऑन. प्लीज एनसीईआरटी पढ़िए, प्लीज एनसीईआरटी पढ़िए. निक्की क्या हुआ? Mohammed, yes, Shlok, Areeb, absolutely, absolutely, Deepak कहते हैं. In which of the following processes the bond order increases and paramagnetic character changes to diamagnetic? Oof, बढ़िया. बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है और पैरा बन रहा है डायमैग्नेटिक. इंटरेस्टिंग. पैरा बन रहा है डायमैग्नेटिक. अच्छा. So can you try this? I have some thoughts in my mind. That's what I have some thoughts on this. But you try it out. आप लोग ट्राई कर देखो एक बार इसको कैसे करना है. हेलो 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 सुहानी, व्हाट्स अप? ट्राई दिस क्वेश्चन आउट प्लीज. इसके बाद एक और सेशन है. यू हैव अ सेशन एट 1 o'clock नितिका जी का. विल रैप इट अप क्विकली, डोंट वरी. Suhani and Mohammed are saying C. Okay. Shiv is also saying C. Rek is saying D. Achha. You're good. That's great, Suhani. So here's a scam way of doing it. Deepak is saying C. Shiv is saying D. 101% D. Rek is changed their answer to C. Rek पहले बोल रहे थे D. Retract करके दल बदलू. Rek has gone back to option C. इलेक्शन का सीजन लग रहा है शुरू हो रहा है. So 14 electrons would have a bond order of 3. This is the only scam trick. The only one time I'm saying यार इसको use कर लो इस trick को, right? Where does this trick come from? From the idea of 8 electrons being there in 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2. ये कितने हो गए? ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन. बाकी बचे कितने? 6. Those 6 electrons, they go into pi x pi y and sigma 2p लिख देते हैं ताकि कोई रोए ना. 2pz, right? 1 2 3 4 5 and 6, right? So इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 6 minus 0 by 2 which is equal to 3. कर लिया on the spot, right? ओके. सो अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा या कम होंगे, लेट्स राइट डाउन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें. ठीक है, सबके कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 18 14 13 15 14 16 15. तो इफ इट इज गोइंग टुवर्ड्स 14 देन बॉन्ड ऑर्डर होगा इंक्रीज. बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज मतलब गोज टुवर्ड्स 14. ओके. सो 16 टू 18 बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज ही हो रहा होगा. 14 टू 13 डिक्रीज हो रहा है. 15 टू 14 इंक्रीज हो रहा है. 16 टू 15 भी इंक्रीज हो रहा है. Okay, in both of these, there's a change of increase in bond order. So it can be either C or D. ये चीज मैंने ऊपर लिखी थी, फिर से यहाँ पे आ गई है. अरे पूरा लिखा था, इसको मिटा देते हैं. This is so much more beautiful, right, than what I was sitting and writing. Here you go. Nice and neat things. So towards 14 would be an increase. Okay, cool. Okay, for 14 ये था और 15 क्या होगा? 15 होगा this, right? For 15 it is this. तो ये था पैरा और ये है डाई. सो आंसर मस्ट बी सी. व्हाट अबाउट दिस ऑक्सीजन वाला बिजनेस? ऑक्सीजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन में वी लुक एट द चैट. हमारे यहां तो अभी इलेक्शन हुए. यू कम फ्रॉम एमपी. अच्छा श्लोक, ब्यूटीफुल. तभी 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 यू डिडंट चेक मैग्नेटिक कैरेक्टर. अच्छा शिव, थंबनेल नहीं दिख रहा तेजस? मैं दिख रहा हूं ना, इतना बड़ा सा थंबनेल. देखिए क्या करेंगे. ये देखो, here is my thumbnail. It's like nice and neatly cut. तुषार, what's up?
ऑप्शन ए में डायमैग्नेटिक नहीं हो रहा युवराज, अच्छा हाँ, राइट राइट राइट, बट ऑप्शन ए में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है क्या? मुझे लग रहा है बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, बढ़ रहा है क्या? ऑप्शन डी में भी डायमैग्नेटिक नहीं हो रहा क्या? नहीं, ऑप्शन डी में तो डिक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो नहीं, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है। ऑप्शन डी में क्या प्रॉब्लम है गाइस? व्हाट इज द इशू विद ऑप्शन डी? बोथ आर पैरामैग्नेटिक इन डी, बोथ आर पैरा, लवली, ठीक है, कूल। सो दोनों ये है 15 इलेक्ट्रॉन वाला चीज एंड ब्ला 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 ब्ला, दैट्स द आंसर, कूल। अगला वाला सवाल देखते हैं। द सम ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट in the central atom of the interhalogen IF5 and IF7. Oh god. See, these are the kind of questions that you can't sit and solve a lot of examples for and mug. ये on the spot figure out कर सकते हो if you know the theory. This is what I'm talking about. हो सकता है you've already solved it before and you'll do it quickly, but you don't have to do that, right? Inorganic chemistry में practice से ज्यादा जरूरी है theory जानना। अगर आप theory जानते हो उसको आप कर सकते हो। Either way, you can also do it with a lot of practice. That's a lot of donkey work, करते जाओ, मालूम हो जाएगा। और अच्छी बुक पढ़ो, हियर इज अच्छी बुक, ज्यादा सफेद है और रिफ्लेक्शन हरा है लग रहा है, खैर एनीवे दैट वाज जेडीली 1 रेक्स लोग शिव सब लोग बोलते हैं 1, रक्षित आल्सो सेइंग 1, ठीक है, देखते हैं क्या ये सही है, लेट अस सी, couple of you saying 2, Rex, Shlok, Shiv, Rakshata, Yuvraj are saying 1. Mohammad Omar and Ganesh are saying 2. Ganesh Kadam saying 2. Rakshata has elaborated why she thinks it is 1. It is 1 plus 0 according to her. मतलब इसमें है 1, इसमें है 0. I'm just writing down whatever Rakshata is saying. Okay. Yuvraj is going in detail. IF5 is 5 bond pair plus 1 lone pair. That's what I wanted to hear. IF5 is 5 bond pair plus 1 lone pair. Exactly what I wanted to hear. Thank you, Yuvraj. IF7 is no lone pair, right? This is that weird compound that has sp3d3 configuration. A unique weird thing right there, right? sp3d3. And this has 7 bond pair, no lone pair. No lone pair. Okay. So, answer is simply 1. Good job! Shantanu, Deepak as well. Sir, एक electron will be counted as F has electronegativity greater than 2.5. Ganesh, Kadam, what? ये तो मेरे सर के बिल्कुल ऊपर चला गया. I have no idea. I've never heard that before, Ganesh. If it's right, it's right. I don't know, bro. Like, इतनी नहीं आती मुझे inorganic chemistry. I don't know what that means. But tell me. Okay, Rek. Acha, Rek is, I think, maybe saying, Nancy also saying 1. Rek is also maybe saying the same thing that Ganesh was saying. Rek is saying, question में specify न करें on cell line, the total loan पर देखना या फिर cell line only. Rek, to answer your question, एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ. Rek, my man. नहीं, actually, JEE ऐसे हरकत नहीं करेगा. आएगा. एक दो सवाल बाद ऐसा सवाल आएगा, but JEE ऐसी हरकत नहीं करेगा. See, you might get a lot of questions that are weird in your mock test or in your modules from wherever, right? I'm not taking the names of any one institute. कभी-कभी सवाल बनाते कुछ चीजें रैंडम हो जाती हैं, right? Human error या फिर lack of whatever, checking, जो भी है. But JEE, trust JEE, वो लोग ऐसी रैंडम हरकत नहीं करेंगे. They will be very specific in asking exactly what they want to ask. So, if they ask for lone pair, they will ask on everything. अगर वो central atom बोले तो सब करो, whatever. It will be clear. जो सवाल पढ़ के समझ में आओ, it will be clear. ठीक है, अगर उससे भी नहीं हुआ तो JEE मार्क्स सबको दे ही देगा, वो सब छोड़ो, that's not important. अगला सवाल, the number of following factors which affect the percentage covalent character of the ionic bond is, यार, look at this is again directly from NCERT, Fajans rules, फिर से JEE 2023 वाला सवाल. Oh, you thought it was IF6, अच्छा गणेश, ठीक है, समझ गया. No, ना, okay, IF6, okay, cool, गणेश, समझा. Deepak is saying 1. अच्छा, वो एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा, समझ में आया. पेंसिलिन में कितने कायरल कार्बन है? आज श्लोक यार, ऐसे सवाल मैं छोड़ देता हूँ. ऐसे सवाल देखो, आई डोंट नो कौन पूछता है, पूछने दो. तो यू हैव हैव यू सीन द टेस्ट में बैटिंग देखा है तुमने? I don't know if anybody still follows cricket or follows test cricket. KL Rahul is really good in test matches because he's really good at leaving balls. Like there was a thing, right? If someone bowls a good delivery, you got to leave it. And that's what it is. One of the questions.
I don't know if it's a good question or a bad question. If you don't know it, leave it. and commentators actually praise you for it, saying, "Oh, that was very well left. That was really good batting because of where you left the ball." All right, but it's good. It's important here because you have negative marking. तो सवाल छोड़ना भी एक कला है जो आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा जेई में. ठीक है, whatever you mark, try and get it correct. Increase your accuracy. अभी लास्ट एक महीने में people ask me कैसे पढ़ना है, क्या करना है. Focus on increasing accuracy. अब कुछ नया पहाड़ नहीं बनेगा. Whatever studied is good. Focus on revising, focusing on improving accuracy. इसका आंसर क्या होगा बताओ. श्लोक made a comment and I went off track, but इसका आंसर बताओ. अरे तो थियरी है. What happened here? दीपक, इस वाले का भी एक या कुछ पिछले वाले का एक था. क्या चैट शांत हो गया और what happened? Or am I like disconnected or something? I think I'm connected. See. Deepak. Shlok, thank you. I need a number as the answer. Yeah, this is a numerical entry. Maybe if that was not clear, my bad. It says number and they fill in the blank, right? So this is a num entry kind of question. So if you're saying C, then the answer is 1. Shlok is saying 3. Anybody else? Rick is saying 2. Okay. Shantru बोल रहे हैं 4. ठीक है. Okay, all right. Yuvraj is like task successfully failed. You know what I mean? Like the answer 3 is correct. But which 3 is different. Answer 3 sahi hai. Anyway, Omar are saying B. Deepak is saying C. Alil Bada is saying D. But इसमें आंसर नंबर चाहिए मुझे दोस्तों. सवाल ध्यान से पढ़िए. ठीक है. Nikki is saying 2. Aakash is saying 3. Mohammed is saying 2. ठीक है. I will put you out of your misery. लिख देते हैं rules. Okay. And just for the sake of, we'll look back at the NCERT. ठीक है. Smaller the size of cation, larger size of anion, greater covalent character. Greater charge on cation, greater covalent character. Okay. ठीक है. Polarizability का कुछ लिखा है. देखो लिखा है. The cation polarizes the anion. Focus क्या है? Cation polarizing the anion. Cation में इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एनायन में, तो वो पोलराइज उसको करेगा, pulling the electronic charge toward itself and thereby increasing the electronic charge between the two. This is precisely what happens in a covalent bond. Build up of electron charge density between the nuclei. The polarizing power of the cation, the polarizability of the anion, and the extent of distortion, polarization of anion are the factors. डायरेक्ट एनसीईआरटी से समझा, समझ में आया. अब ये दिखाने के बाद do you follow what the answer is going to be? Polarizing power of cation, extent of distortion of anion, polarizability of the anion. ये वाला नहीं होगा. ठीक है. Cool. ABC. युवराज is saying BCE, now he's saying ACD. यार देखो मार्क्स मिल गए, छोड़ दे. जेई में इतना सोचने का नहीं, बट बी केयरफुल. सी देखो केमिकल बॉन्डिंग में द सीन इज दिस, राइट. थियोरी अगर मालूम है तो मार्क करो, अगर कोई भी डाउट है तो छोड़ दो, स्पेशली न्यूमेरिकल एंट्री में. दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. द आंसर इज 3. गणेश, आई डोंट नो इफ यू डू, मुझे नहीं मालूम है वो वाली थ्योरी. ठीक है. आई हैव नॉट सीन इट इन जेडीली. इफ समबडी एल्स इज टॉट इट, हो सकता है यार, मुझे अभी मालूम नहीं है गणेश. आई कैन रीड इट अप एंड गेट बैक टू यू. राइट, पिंग मी ऑन IT Scam. आई गेस आई चेक इट आउट. ठीक है, ऑन डिस्कॉर्ड और ऑन टेलीग्राम, एंड आई गेट बैक टू यू. ABC Shlok. Yeah, Rakshita, that's I would think it's just an odd electron species too. But since उन्होंने बोला तो I have not read it, तो मैं बोला मैं पढ़ के बता दूंगा. युवराज convinced is ABC. Rakshita convinced is ABC. हाँ सर, आंसर तो ठीक निकल गया, but that is a risk. Dangerous life live कर रहे हो युवराज. It's not about the answer, it's about the process. That's what I'm trying to drill into your heads. ठीक है. डायरेक्ट थियरी यार एनसीईआरटी से. मार्क्स डोंट मैटर हियर. तुम लोग थियरी पक्का करो अपनी. ऐसा थोड़ी ना ये सवाल फिर से आ जाएगा तुम्हारे जेई में, कुछ अलग ही आएगा. तो फोकस ऑन थ्योरी. अगला सवाल करते हैं. मोहम्मद उमर, दैट्स इट, यू आर राइट. बट वही मैं तो आपको, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू ड्रिल इनटू योर लाइफ, राइट, इनटू योर हेड्स. इट्स योर फोकस ऑफ कॉन्सेप्ट. लाइफ का क्या कॉन्सेप्ट है? तुक्केबाजी लाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए. जेई इज जस्ट एन एग्जाम, राइट. आपका फोकस होना चाहिए कॉन्फिडेंस से. यू आर गेटिंग व्हाटएवर यू आर गेटिंग, मिल जाएगा. अभी मार्क्स मिले, कल कुछ और होगा. यू विल टेक सम मोर डिसीजन इन योर लाइफ.
द फोकस इज कॉन्फिडेंस एंड दैट कॉन्फिडेंस कम्स आउट ऑफ प्रिपेयर्डनेस. ठीक है, इस सवाल को देखते हैं. इन एन आइस क्रिस्टल ईच वाटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू एक्स नेबरिंग मॉलिक्यूल्स. ये वाला सवाल डायरेक्टली हाइड्रोजन चैप्टर से है, डायरेक्टली हाइड्रोजन चैप्टर से है, बट आप इसको बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हो. युवराज गेस नहीं करना चाहिए. That's the युवराज, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट. मैं ये बोलना चाहता हूं कि गेस नहीं करना चाहिए, राइट? बिकॉज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इज अ वीक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड आई मे बी सेइंग समथिंग कंट्रोवर्शियल और अनपॉपुलर, बट गेस करने से जो एंजाइटी आती है, इट इज नॉट वर्थ इट. देयर इज द साइड ऑफ अपसाइड ऑफ दिस गैम्बलिंग थिंग कि अरे मिल गया तो क्या मजा आ जाएगा, बट दैट लाइफ इज a weak concept मेरे हिसाब से. and also it's a line of thinking, right? It's a line of thought. You may think differently, which is fine. मैं आपको अपना point of view बोल रहा हूँ कि for you to like what you're doing while you're doing it, the process, ताकि आप किसी और चीज पर डिपेंडेंट ना हो. whatever you're doing is in your hands completely. खैर, इसका आंसर तो 4 है. everybody has figured it out. सिंपल सा क्वेश्चन था. शांतनु, तुषार, दीपक, शांतनु फिर से, अब्दुल्ला, रियाज, कॉन्फिडेंटली, रक्षिता, मोहम्मद उमर, श्लोक with the question mark, दीपक and Rek are all saying 4. lovely, lovely. okay. बड़े श्लोक से युवराज, ये तो तुक्का है जो लाखों में एक बार लग जाता है. हो सकता है कि तुक्का और भी ज्यादा लग जाए, बट तुक्का इज नॉट इंपॉर्टेंट इन लाइफ. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. खैर, these are the 4 hydrogen bonds that get formed over here. All right, I think we are out of time, but I have maybe एक दो सवाल और आपके साथ कर ही लेता हूं. क्या लगता है आपको? एक दो सवाल PYQs कर लेता हूं. एक, I'll tell you what we'll do. We'll do one regular question, one JEE advanced का question and one homework. चलेगा? वन रेगुलर क्वेश्चन, वन JEE एडवांस का, वन होमवर्क. ठीक है, हियर इज वन रेगुलर क्वेश्चन, JEE मेन वाला. द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ओजोन इज व्हाट? देखो, रेक्या युवराज कोई पूछ रहा था ना कि स्पेसिफाई नहीं है क्या सेंट्रल एटम. सो नाउ इट्स सेइंग ऑल ऑक्सीजन एटम. सेंट्रल एटम बात नहीं हो रही, ऑल ऑक्सीजन एटम्स. ट्राई कर लो. हाँ, यू हैव अ सेशन एट 1 o'clock ना. आई वांट टू टेक अ ब्रेक, थोड़ा चिल करके आओ. तो आई विल टेक मे बी 8 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे. By before 12:40 we'll wrap up. Try this out. Tushar is saying 2. Lone pairs. Tushar, सब में. All of them. Yeah, try it out. It's important to take breaks. Very important to stay physically and mentally fit. So इसलिए I really, I'm a big proponent of that. Breaks जरूरी है. 0. सुहानी. अच्छा, सुहानी 0. कैसे होगा सुहानी? सेंट्रल ऑक्सीजन पे हो सकता है 0. ऑक्सीजन एटम्स प्लूरल शब्द लिखा है सुहानी, ध्यान से करो. रक्षिता सेइंग 6, शांतनु सेइंग 6, श्लोक सेइंग 6, युवराज सेइंग 6, दीपक, रक्षिता चेंज देयर आंसर, ओमर, सुहानी इज सेइंग 4 नाउ, शांतनु वाज सेइंग 6. अच्छा, ठीक है, कूल. सो लुक्स लाइक इधर 4 और 6. ठीक है, या तो चौका या तो छक्का. ग्रेट. नाउ वी बैक टू क्रिकेट टर्म्स. हियर इज अ स्ट्रक्चर. नहीं यार, सेंट्रल में भी 0 नहीं होगा ना, सेंट्रल में भी 2 होंगे. इवन इन सेंट्रल इट वोंट बी 0. सो दिस इज हाउ आई वुड ड्रॉ द स्ट्रक्चर. इट्स ईदर दिस और द अदर वे अराउंड. इट्स द सेम, इट्स अ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर. दोनों तरफ ड्रॉ करो, व्हिचएवर वे यू ड्रॉ इट, राइट? यहां पे डबल बॉन्ड बनाओ, वहां पे बनाओ, डजंट मैटर. खैर, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे, 7 8 यहां पे हो गए. देयर इज नो चार्ज, राइट? सो ऑल ऑफ देम विल हैव एन ऑक्टेट. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Just count, make it octet, make it up to octet, and then you count. Okay, and you need pairs. So you have 1 2 3 4 5 and 6. Yeah, the answer should be 6. Excellent work. सही है. ठीक है, ये वाला आसान सवाल था. चलो, let's move on to a question that was asked in the JEE advanced exam very recently. Among all of these species, how many of these have sp3 hybridized central atom? And this is what makes JEE advanced questions a little annoying in chemical bonding. Because you basically have to solve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. 12 चीजों के स्ट्रक्चर निकालने हैं और उसमें से मिलेंगे आपको 3 मार्क्स. नंबर है ना, नंबर आंसर +4 0 है शायद. आई थिंक +4 and 0 इज इन JEE एडवांस ऑफ इस टाइप का सवाल. रेगुलर इज +3 -1. दैट्स एन MCQ. MSQ क्या था अभी याद नहीं आ रहा, शायद +4 -2. 4 -2. बट एनीवे, पुरानी बात है, अभी भी शायद यही होगा. चेक करो. You did not change. That's okay, Raksha. That's all right. That's all right. You're sticking to 6. Lovely, lovely. It's okay, Swani. सही है. ये मैंने किया था पेपर में. श्लोक, अच्छा आपने किया था.
श्लोक, हाउ डिड दिस क्वेश्चन गो? आपने उसका बाद में सोल्यूशन देखा था क्या श्लोक? इट्स ओके, इट्स ओके, बहुत बढ़िया किया था, बट सोल्यूशन देखा था कि कैसे क्या होता है फाइनली? 9 इज सेइंग, ओमर इज सेइंग 9, ठीक है, ओके, व्हाट डू द रेस्ट ऑफ यू थिंक? ये i3 प्लस नहीं बनाया, व्हाट ऑन अर्थ इज i3 प्लस? i3 माइनस आपने पढ़ा हो कोचिंग में, i3 प्लस क्या है? सिंपल है यार, i3 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बन जाएगा i3 माइनस i3 प्लस, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। वेंट करेक्ट, लवली श्लोक, बढ़िया है। So, how about this, Shlok? Can you tell me which of these is sp3? Instead of telling me the number, can you like just type आराम से, take your time and type while the others solve this question? Type करते हैं. In the interest of time, let me start analyzing them one by one. You guys also do it. मैं भी करता हूँ because a lot of these students are going to be watching this not live, right? For their benefit. अगर मैं वेट करूँ आपका 12 क्वेश्चन करने का तो टाइप काफी लग जाएगा, तो I'll just start doing slowly one by one. Deepak is saying 5. ठीक है, 5 says Deepak, Omar says 9. Okay. ठीक है, which 5 दीपक, which 9 ओमर? i3 माइनस जेडीली में था, मैं पढ़ाया था इसलिए मैं बोल रहा हूं, 10 इलेक्ट्रॉन था, i3 प्लस होगा 8 इलेक्ट्रॉन ऑन, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल आयोडीन एटम, ओके। सो i3 प्लस विल हैव 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स। डू यू अग्री और डू यू डिसएग्री विद दिस? प्लीज लेट मी नो, या फ्रॉम दैट आइडिया समझ में आया, फिर जस्ट रैंडम, let me know. Why 2 lone pairs? 2 lone pair मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड पेयर मतलब 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स, 2 इसके खुद के सिंगल बॉन्ड्स और 2 दूसरे आयोडीन एटम्स के, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, हाँ, दैट्स व्हाट आई वाज, ओके। SiO4 4 माइनस, डरावना लगता है देखने से, बट इफ यू हैव स्टडीड जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ग्रुप 14 एलिमेंट्स में इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, but if you don't remember it, कोई चक्कर नहीं है, no issue. You have Si, O minus, O minus, O minus. So it has 4 bond pairs, but it's not going to be square planar. Okay. Let's first we'll talk about whether it is square planar, tetrahedral, वो बाद में देखेंगे. But पहले let's count the number of bond pair, lone pair. Let's just do that. Simple exercise करते हैं. इसमें 4 है, इसमें भी 4 है. If you have any doubts, let me know. अगर if anything I'm writing you disagree with me, please tell me कि hey ये वाला नहीं समझा. You agree, okay? Omar agrees. Deepak is saying 1, 2, 3, 7, 11. Okay. Deepak is saying 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. अच्छा, ठीक है. I've highlighted the one Deepak says 5. Omar, what do you think? अगला वाला क्या है? SO2 Cl2. ये straight forward है. 4 bond pair. Remember, I'm only counting the sigma bonds. SO2 Cl2 में क्या होगा? You'll have S and you have O, Cl and Cl. ठीक है? But I only count sigma bonds. So यहाँ पे हो गया 2 and 2. I'm not drawing structure anything. यार मैं बना रहा हूँ, just drawing it just to get 4 bond pairs आसानी करने के लिए. XCF2 तो definitely नहीं है यार. Is not the answer, okay? Because you've done it hundreds of times. This is going to be linear, right? अगर ये structure याद नहीं है, 2 bond pair, 3 lone pair, ये 3 lone pair भाई साहब होंगे इधर, या in this triangular fashion, and एक ऊपर एक नीचे. This is linear. I've done this in theory session in detail. If you don't remember this, please look that up. SF4 भी नहीं होगा, because SF4 तो NCERT में दिया हुआ है भाई. 4 lone pair, 1 bond pair, seesaw structure. ये होगा आपका इधर, like this, right? SF4. खैर, ClF3 and NiCO4. These get interesting. ClF3 is similar to SF4 in the sense कि 2 lone pair हो जाएंगे and 3 bond pair हो जाएंगे, and it's not going to be tetrahedral, so we can cross these guys out for sure. NiCF4 is tetrahedral. PtCl4 2 minus is square planar. ये coordination compound से आ गया यहाँ पे. Okay, this is from coordination. I know we are doing a chemical bonding का session, but it's hard, right? JEE advanced ऐसा करता है, multi concept सवाल पूछता है, तो ये वाला है. तो this one is definitely tetrahedral. I've marked this one out. XCO2F2 interesting. It has 4. You can जल्दी में आप सोच सकते हैं इसका 4 बॉन्ड पेयर है, but it also has a lone pair. क्यों? Xe में है 8 इलेक्ट्रॉन्स. 8 में से 4 यहाँ पे हैं और यहाँ पे 2 यहाँ पे हैं. ठीक है, 6 हो गए, तो 2 बचे, तो एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है. तो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर.
XCF4 looks very likely candidate, but it is not. It is not because it has 4 bond pair and 2 lone pair, तो ये भी नहीं है. अब तो बहुत क्रॉस आउट हो गए. SiO4 यहाँ पे इरेज करता हूँ. More stuff will come there. बचा क्या अभी? Only SOCl2 is left. Interestingly, SOCl2 also has 4 total of BP and LP. कैसे? SOCl, Cl and lone pair. Now to identify इसमें से कितने हैं टेट्राहीड्रल. तो ये दोनों तो है. दिस इज टेट्राहीड्रल, दिस इज टेट्राहीड्रल. 1 2 3 हो गए, 4 और 5. एक्सीलेंट वर्क. सबसे पहले किया था दीपक ने ये चीज. लवली वर्क दीपक. गुड जॉब डूड, गुड जॉब. यस श्लोक, PTCl4 में DsP2 है. दिस इज sp3. थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट. दिस इज sp3, दिस इज DsP2. ओके, एक्सीलेंट स्टफ. गुड मॉर्निंग पवन, हाउ आर यू डूइंग? Okay, all right, Pawan. All the best with this. See, right or wrong is a difficult thing for me to judge for you, right? क्या सही है आपके लिए, क्या जायज है? You have to take call on that. But main thing, you have to live with that. Pawan, जो भी consequence हो, you have to deal with it. You have to be prepared for that. That's important. Answer is 5. It's okay, Rek. Yes, Shlok. Answer is 5. So this is why a lot of people say that JEE Advanced में inorganic मुश्किल होती है. क्योंकि JEE Advanced में इनऑर्गेनिक ऐसी होती है. अगर ऐसी होती है तो लाइफ में भाई हाउ यू गोइंग टू इवन फिगर दिस आउट, राइट? इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डू दिस. मैंने थोड़ा जल्दी में कर लिया बिकॉज आई हैव टॉट दिस मल्टीपल टाइम्स. बट इफ यू आर डूइंग दिस इन अ टेस्ट, कभी कभी यार टाइम लग जाता है, टाइम लग जाता है. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. आई नो इट्स 41 ऑलरेडी. एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी. यू विल डू दिस लाइक दिस एंड देन वील कॉल इट अ डे. I'll give you homework also. Based on VSC bar theory, the number of 90 degree angle FR BRF is in BRFI is how much? जल्दी से वाला बताओ, जल्दी से वाला बताओ. हाँ श्लोक, ऐसे आते हैं. It's shameless. They ask these kind of questions because inorganic में क्या पूछेंगे यार आप लोगों से? To be honest, inorganic और organic इतना होना नहीं चाहिए सिलेबस में. Because they can't ask you a good question on this. Good question is कि organic यार engineering में क्या जरूरत है? I don't think it's necessary. But hey, अगर unless you want to do something specifically in organic chemistry, in organic या फिर organic में. In fact, even in metallurgy, you do mainly thermodynamics. Okay, khair. Last wala sawal for today. Yeah, it was fun question, right? Right? Yeah, pura revision ho gaya. NO2 you get sp2 hybridization, but it's odd electron species. Why do we count one electron of nitrogen as lone pair, not NO2 and just NO2 and not NO2? Hey, I've done this in a theory session. Ganesh, ping me on iTeach Chem. I'll cover that in detail there. Since I'm way out of time and I've extended the session already by 15 minutes, I can't go into that, Ganesh. I know you have these doubts. But ping me, dude, on Telegram or Discord, and I'll help you out there. Okay? I can't go into that right now. I'm sorry. Just this last question. Yeah, that question would take about 5 minutes, which is okay. JEE Advanced में time है. क्या फर्क पड़ता है? Pawan, not something that I care about. आपको ओपनली बोलूं तो कट ऑफ मार्क्स क्या है उसमें मेरे का मतलब है. आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए. आपको फोकस करना चाहिए पढ़ाई में और गिविंग अ बेस्ट शॉट. फिर कॉलेज जो मिलेगा देखा जाएगा. यू फोकस ऑन प्रोसेस. I like this. Shlok is saying 6. Yuvraj is saying 8. Mohammad Omar is saying 6. Does anybody want more time on this or ये हो गया? आसान सा सवाल है. देखो BRF, let's do it from first principles. इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? FBR में क्या होगा? You have 5 bond pair, 1 lone pair. Just like IF5. Just like IF5. Okay. ठीक है. अब उसको ड्रॉ कैसे करोगे? ड्रॉ करोगे ऐसे, है ना? F F F F F. श्लोक saying 8. देवज्योति क्या हुआ? क्यों रिट्रैक्ट कर दिया मैसेज? ओके. मोहम्मद उमर saying 8. Bros and ladies, are you sure that this is correct? Rakshita 6. Devjyoti wins this round of inorganic chemistry fun. I don't know what to call it. DJ Babu is saying 0. I have a good friend called Devjyoti. I'm not messing with your name. I have a good friend called Devjyoti who works here. We call him DJ. Khair, anyway. Answer is 0, दोस्तों. सोचो क्यों होगा 0? None of these are 90 degree angles. It all gets pushed out. This angle also is not 90 degree because सारे get pushed upwards. ठीक है, distort होता है. देवज्योति, मन्ना,
केम हियर, माइक ड्रॉप मोमेंट और चले गए. सही है, पूरे सेशन के एंड में आए, एक का जवाब दिया, निकल गए. ब्यूटिफुल. आई मेड अ शॉर्ट ऑन दिस ऑल्सो, विल कम आउट सून, बट दिस इज द आंसर. ठीक है, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई हैड प्लान्ड फॉर टुडे. लवली क्वेश्चन टू एंड द डे विथ, राइट? सब लोग मैसेज रिट्रैक्ट करते हुए बहुत जल्दी. सेशन हो गया संदीप. आई एम सॉरी दैट आई एक्सटेंडेड बाय 15 मिनट्स. थ्योरी थोड़ा लंबा हो गया, सो एक्सटेंडेड सेशन आल्सो. वी आर डन. सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है रक्षिता, जस्ट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम. ये जेई 2010 का सवाल है, मतलब अभी 2024 में आने के बहुत चांसेस हैं. 14 साल हो गए, 14 साल तो वनवास हुआ था. 14 years हो गए. आई एम प्रीटी श्योर दिस क्वेश्चन थोड़ा कम अगेन इन सम फॉर्म. इधर जेई मेन और एडवांस, पक्का बता रहा हूं, पक्का आएगा ऐसा. यस, ऑल राइट. It doesn't matter, आएगा नहीं आएगा, not important. Here is your homework question. A lot of you like homework questions, so here it is for you. ठीक है? Thank you so much for attending this session. I'll see you around on Thursday. Yeah, lovely question to end the day with. This is a link of all the sessions I generally do. Description में notes में डाल दूंगा. As always, share this with your friends if you enjoyed this, and subscribe to this channel for awesome content like this. चलो, मिलते हैं फिर Thursday को. Okay, here's the homework question. I'll see you. And if you want to attend some neat sessions, I have one coming up at 6 o'clock today. Bye. Take care, everybody. It was good fun. घूम गए, मजा आया. थ्योरी करने में मजा आया. It's been a long time since मुझे थ्योरी और सवाल दोनों करने में मजा आया. And today was that one exceptional day. चलो, lovely. See you all. Bye. ऑर्डर कर दूं?